Prime Minister Narendra Modi launches distribution of property cards under SVAMITVA Scheme. Interacts with 763 beneficiaries across 6 states and says that the scheme is a historic effort towards rural transformation. The country has taken another major step towards Atmanirbhar Bharat. The political activities have geared up in Bihar. Ahead of the elections, the BJP Central Election Committee met in Delhi in the presence of the Prime Minister. They discussed the party candidates for the remaining phases. The BJP President J.P. Nadda will address a rally in the poll-bound Bihar's Bodh Gaya amid the coronavirus restrictions. Corona recoveries in India cross 60 lakh mark. The recovery rate has enhanced to 86.17%, and less than 1,000 deaths have been recorded for 8 consecutive days now. The nation salutes Loknayak, Prakash Narayan and Bharat Ratna Nanaji Deshmukh on their birth anniversaries. Vice President, Prime Minister and other union ministers remember the legends of India. The Prime Minister says that today is a day to rededicate ourselves towards fulfilling their vision for our country. And in sports, in the French Open men's final, Novak Djokovic and 12-time champion Rafael Nadal to clash today. Nadal eyes a 13th French Open title and Djokovic will be fighting for his second title. Namaskar and welcome to the news. I'm Mark Lynn. Here's our top story. In a major step to transform and empower rural India, Prime Minister Narendra Modi today launched the physical distribution of property cards. This is under the survey of villages and mapping with improvised technology in village areas, SVAMITVA scheme. He did so via video conferencing, and the launch has in fact enabled around 1 lakh property holders to download their property cards through the SMS link delivered on their mobile phones. The much-awaited move has paved the way for using property as a financial asset by villagers to take loans and for other benefits. In line with this, the first installment of rupees 5 lakh of a 15 lakh note was given to one of the beneficiaries. Well, speaking on the occasion, the Prime Minister said that today the country has taken another major step towards Atmanirbhar Bharat, and he added that ownership plan is going to help a lot in making people living in the villages self-reliant. आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। Lashing out at earlier governments for depriving people of even the basic necessities like electricity and LPG cylinders, the Prime Minister said that the present government has provided pakka houses to over 2 crore people, and the government is committed to extending these benefits further. 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब
गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था, आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था, आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। Prime Minister Narendra Modi said that the SVAMITVA scheme is historic. It's a historic effort towards rural transformation. He said that property cards give legal rights to beneficiaries over their properties. ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है, आपके घर में आप ही रहेंगे, आपके घर का क्या उपयोग करना इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। And BJP President JP Nadda is addressing a public rally in Bodh Gaya. Let's go across live there now. मैं भाषण करता हूं, मुझे अपना युवा काल याद आ गया। की ओर बढ़ रहे थे तो बिहार जो ज्ञान का प्रदेश है, जो तप का प्रदेश है, जो प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला प्रदेश है, जो महापुरुषों का प्रदेश है, जो दुनिया को दिशा देने वाला प्रदेश है, वो बिहार नई आवाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लगा। ऐसी महान आत्मा को याद करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात। और मुझे यह भी ध्यान में आया कि नानाजी देशमुख, जिनको जो राजनीति में चमकते दमकते सितारे थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानकर, राजनीतिक दृष्टि से प्रेरणा स्रोत मानकर, उसी कदम कुआं के घर के प्रांगण में जयप्रकाश नारायण जी से आशीर्वाद दिया था। क्योंकि नानाजी देशमुख का भी जन्म दिवस 11 अक्टूबर को ही पड़ता है और मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं कि नानाजी ने उस मंच से जयप्रकाश जी के पांव छूते हुए आशीर्वाद लिया था और कहा था, नाना जी आपका जन्म तो 1902 का है, मेरा 1916 का है, मैं 61 साल का हो गया हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, आज से राजनीति को त्याग करके समाज के काम में जुट जाऊंगा, समाज के काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं छोटा था, मैंने कहा, नाना जी चमकते दमकते राजनीतिक सितारे और ऐसे समय में आप त्याग रहे हो, 61 साल उम्र हो गई, अब आगे आप क्या करेंगे? मुझ जैसा भी छोटा अज्ञानी को मालूम नहीं था कि नानाजी देशमुख के करकमलों द्वारा अभी उससे ज्यादा और ज्यादा दूरगामी प्रभाव करने वाला ग्रामोत्थान का आंदोलन उनके हाथों से होना था और अगले 30 साल उन्होंने उसी काम के लिए दे दिए। ये प्रेरणा हमको बिहार से मिलती है, ये प्रेरणा हमको इस स्थान से मिलती है, यहां के नेताओं से मिलती है। इसलिए मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार वासियों के लिए विशेषकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करना, संपूर्ण क्रांति को याद करना, ये दीगर बात है, ये अलग बात है कि जो नेता जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से राजनेता बने, मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, और जिस जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी को किनारे करके जनता पार्टी बनाई थी, उस जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के बावजूद भी आज के परिस्थिति में कांग्रेस को गले लगा करके चल रहे हैं, उनके कहे कराए सारी चीजों का के साथ, जिसको कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसे आज की परिस्थिति आकर के खड़ी। और मैंने कहा आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। वो खुशी का दिन इसलिए है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसानों को
भारत के लोगों को, भारत की जनता को रेवेन्यू के मामले में, जिसे हम अपना जमीन से जुड़ा हुआ विषय बताते हैं, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको आजाद कर दिया है। आप पूछेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व पत्र यानी 6,32,000 गांव में जिन जिन लोगों की जहां जहां जमीन और मकान है, उसके स्वामित्व का डिजिटल कार्ड मिलेगा और वही कार्ड उसकी जमीन का प्रमाण बन जाएगा। इस तरीके से मोदी जी ने भारत के किसानों को आजाद कर दिया। अब आपको पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपको जमीन का इंतकाल करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपको जनेब लगा करके नपवाने के लिए किसी पटवारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब सारे का सारा काम ड्रोन से और सैटेलाइट से और नीचे रेखा खींच करके और उधर वेरीफाई करने के बाद हर की जमीन, हर का मकान कितने फीट का है, इसका स्वामित्व कार्ड बनेगा और 6,32,000 गांव में एक एक व्यक्ति का स्वामित्व रिकॉर्ड बनेगा और वो मिलेगा। ये आज के दिन शुरू हुआ है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम नए मोदी जी के दौर में एक नए दौर से गुजर गए, एक नया जमाना आ गया। कभी आपने कल्पना की थी, कभी आपने सोचा था कि आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मेरे पॉकेट में एक डिजिटल कार्ड होगा, जिस कार्ड को हम कहीं भी दिखाएंगे तो वो मेरे मोबाइल पर ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा कि मेरे पास कितने बीघा जमीन है और कितने कट्ठा जमीन है और कितने बिस्वा जमीन है, मेरा मकान कितनी वैल्यू का है, कितनी प्रॉपर्टी का है। ये स्वामित्व देने का काम आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके लिए आप सबकी ओर से उनको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को यह खुशखबरी सुनाकर बताना चाहता हूं कि देश मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से नई कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। And that was J.P. Nadda, the BJP president, addressing a rally in Bodh Gaya in Bihar, in Polban, Bihar. Earlier, J.P. Nadda visited the famous Mahavir temple in Patna, and the BJP president and the Bihar Deputy Chief Minister Shri Modi offered prayers at the Mahavir temple. Later, he also visited the JP Nivas in Patna and paid floral tributes to Loknayak Jayaprakash Narayan on his birth anniversary. Jayaprakash Narayan had lived in JP Awaz. Also, Nadda will, as we know, has already spoken at a public meeting that he was speaking also to workers in Patna, and he will also be meeting district presidents. He'll be meeting other representatives, including MPs, also assembly election candidates and other senior leaders. He will be interacting with them. The first phase of the 3-phase polls in the state is scheduled to take place on the 28th of this month. The nation salutes Loknayak Jayaprakash Narayan and Bharat Ratna Nanaji Deshmukh on their birth anniversaries. Nanaji Deshmukh's sharp intellect and extraordinary organizing skill has put an indelible mark on Indian politics. JP, as he's known, was among the great leaders who played an essential role in politics during the independence movement of the country. The Vice President, Prime Minister, other union ministers, they all remember the two legends of India. The Vice President paid tributes to Jayaprakash Narayan, and tweeting, he said, and I quote, "I pay my humble tributes to freedom fighter and one of the tallest leaders of India, Loknayak Jayaprakash Narayan, on his birth anniversary today. His crusade to protect democracy and fight corruption have left an indelible imprint on the minds of people." Paying tributes to the great social worker and visionary leader Nanaji Deshmukh, the Vice President said, and I quote, "He devoted his entire life to the service of the nation. His compassion for the downtrodden and passion for rural development will always remain an inspiration."
Remembering Bharat Ratna Loknayak Jayaprakash Narayan and Bharat Ratna Nanaji Deshmukh, the Prime Minister said that such a huge work is being done today on the birth anniversary of the two great sons of India. आज इतना विराट काम एक ऐसे दिन हो रहा है, इस दिवस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिवस का हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व है और वो है आज देश के दो महान सपूतों की जन्म जयंती है। एक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख। इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही आज 11 अक्टूबर ऐसा नहीं है, एक ही तारीख को पड़ता इतना ही नहीं है, बल्कि ये दोनों महापुरुष देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए, देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए दोनों की सोच एक थी, दोनों के आदर्श एक थे, दोनों के प्रयास एक थे। The Union Health Minister Dr. Harshvardhan has shared his personal cell number to alleviate problems of his constituents during the Sunday Samvad 5, and he has said that fighting against COVID is our foremost dharma. And he also stressed that no religion or God says that you have to celebrate a festival in an ostentatious way. My dharma is to protect my people, to save lives and not destroy. No religion or God says that you have to celebrate in an ostentatious way, that you have to visit pandals and temples and mosques to pray. These are extraordinary circumstances and they must draw extraordinary responses. Well, as per data by the Ministry of Health and Family Welfare, India has crossed the landmark milestone of more than 60 lakh recoveries. The 5 top states with the maximum caseload are also contributing the maximum number of total recoveries. And this has sustained India's leading global position as the country with the maximum number of recovered cases. Let's take a look at an update on COVID-19 from across the country. The corona recoveries in India have crossed the 60 lakh mark. India continues to report a decline in active cases of COVID-19, with the number of infections staying below the 9 lakh mark for the third day in a row. According to the latest data by the Health Ministry, the total recovered cases improved to 60,77,976. The national recovery rate has jumped to 86.17%, with the continuous streak of high number of recovered cases being reported in the past few weeks. 89,154 patients of COVID-19 have recovered in the past 24 hours. India is conducting COVID tests at a fast and rapid pace, and the Centre said that the Centre-led COVID management strategies, they are focused largely on early detection through widespread, easy and aggressive testing. According to the Indian Council of Medical Research, 10,78,544 tests were conducted during a single day yesterday. The total number of sample tests so far, the sample tests have increased now to 8,68,77,242. In Guwahati, in fact, people have started visiting the Kamakya temple, the Kamakya Devaslaya temple. It has reopened from today for devotees to perform the parikrama. The gate remains open from 8 in the morning till sunset on normal days. However, the timing may be changed during the Navratri and Durga Puja as well. The devotees and others will have to follow strict guidelines to prevent any spreading of COVID-19. They have to undergo a rapid antigen test for COVID-19. The inner sanctum sanctorum will, however, remain closed. This has been done as per the discussion with the district administration. In Jammu and Kashmir, the Pedal for Peace cycle race received massive response from the youth. Youngsters turned out to participate in the race
with full enthusiasm. The race was flagged off by the advisor to the Lieutenant Governor at Nehru Park in Srinagar. The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, was present on the occasion. And while addressing that gathering, the Lieutenant Governor said that this race will lay the roots of peace and brotherhood among the people of the Union Territory. पेडल फॉर पीस सिर्फ साइकिल रेस नहीं है, इसके जरिए अमन, खुशहाली और भाईचारे की नींव रखने की कोशिश की जा रही है और आवाम के सभी लोगों में मोहब्बत का पैगाम बांटने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। इस तरह के भी अनेक आयोजन अमन और खुशहाली के लिए नए-नए प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज के साथ करती रहती है। Some international news now. Fresh shelling has been reported in Nagorno-Karabakh region. That's just after the ceasefire came into force between Armenia and Azerbaijan. And both countries are accusing each other of swiftly violating the norms of that truce, which they entered into after talks mediated by Russia in Moscow. So in Moscow, the Moscow talks, they were the first diplomatic contact, in fact, between the two countries who have been fighting a mountainous enclave, a war that erupted last month, claiming the lives of more than 300 people and have rendered thousands displaced as well. Let's now take a look at an update on COVID-19 from across the world. Over 3,74 lakh coronavirus cases have been reported worldwide, with over 10,77,000 deaths. And as many as 2,81 lakh people have recovered from the virus so far. The United States tops that list among the worst hit countries by the pandemic so far, with the highest number of infections. The US has over 79 lakh 45,000 cases of COVID. The death toll is 2,19,000. Some sports news now. The 2020 French Open men's singles final is it's set to come to a conclusion with a blockbuster final, in fact, between the two world top players, Novak Djokovic of Serbia and Rafael Nadal of Spain. They'll be facing off for ultimate glory in Paris today. And Nadal will be eyeing a record 13th French Open title. Djokovic will be trying to win his second title. Nadal defeated the Argentinian Diego Schwartzman in the semi-finals, 6-3, 6-3, 7-6. That was a straight set win. And reaching the finals, Nadal is now close to equaling Federer's record of 20 Grand Slam titles. He's just one behind. However, the world number one, Novak Djokovic, entered the finals, defeating the fifth seed Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1. And Djokovic, in fact, is at 18 Grand Slam titles, and if he wins this, he'll be at 18, so he's just one behind Nadal in that race. Now, securing a first Grand Slam title is supposed to be an arduous task, but the 19-year-old Iga Swiatek crowned an extraordinary fortnight and won the French Open in a blaze of winners on Saturday, crushing Sofia Kenin 6-4, 6-1. And Swiatek, in fact, had only dropped 23 games en route to the final and produced some audacious tennis as she became the first Polish player to win a Grand Slam singles title. Moving on then, the Sports Ministry has released the SOP for the resumption of training of sportspersons in swimming pools. Now, as per the SOP, it is the responsibility of the entire head and coach in charge to ensure complete adherence to training protocols. The Home Ministry allowed swimming pools to open for the purpose of training from the 15th of October, and this SOP applies to all Sports Authority of India and non-SAI centres wherein training of sportspersons will resume. The head coach will ensure that the training is carried out with the minimum required staff only. All personal training equipment belonging to an athlete will have to be disinfected while the athlete is inducted into the training center. Hand hygiene facilities will have to be made available adjacent to the swimming pool. The athletes have to perform hand hygiene before and after the use of all training equipment. A COVID task force will be constituted at each training center to guide and monitor all trainees
coaches and staff within the centers. The task force will also be responsible for overall implementation of protocols outlined in the SOP, and athletes and staff will be screened before being allowed access to common field of play as well as training facilities. RT-PCR test will be conducted for new and returning athletes. Also, the use of Arogya Setu app will be mandatory for all athletes and staff at the center. And that's all we have in this bulletin. Thank you for being with us. Namaskar.